This is the building of Noli Studios Kata Yanoka. This behind this building is the Samandar. इस होटल की सबसे कमाल की बात यह है फिनलैंड जाना जाता है अपने सौनास के लिए। यहां पर जितने लोग हैं उससे ज्यादा सौना है। This has been such an absolute delight of a find for us. It's not cheap, but it's not very expensive. I would say it's great value. यार, दिल खुश कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के बारे में सोचें, और अगर मेरे YouTube चैनल को आप पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए अब वीडियो जारी रखते हैं। थैंक यू। हाय, स्वागत है आपका हेलसिंकी की इस बहुत ही प्यारी होटल में जिसका नाम है नोली स्टूडियोज काता यनोका। काता यनोका इज द एरिया, ये समंदर से लगकर एरिया है एंड दिस हैज बीन सच एन एब्सोल्यूट डिलाइट ऑफ अ फाइंड फॉर अस। हम दरअसल कुछ दिन हम कहीं और रुके थे, फिर वहाँ पर अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं था, सो वी वर लुकिंग फॉर अ नाइस बुटीक स्टे ऑप्शन एंड दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी सो मार्वलस। इट इज़ अ बुटीक डिजाइनर होटल, बट इट इज़ नॉट जस्ट अ होटल, it is so much more. They have a co-working area, they have a common kitchen, they have multiple working lounges, they have their own sauna, steam, gymnasium, they have their own restaurant, they have their cafe, and the best part, something that I love the most, something that I really put a lot of value to, it is a very aesthetically and a very beautifully designed typical Scandinavian hotel. छोटी है पर इतनी प्रीमियम है। All the rooms are facing the sea, compact rooms. Each room has a kitchenette, has a washing machine, and for now we are right now in the lobby of the hotel. Come with me, let me show you around. So as you can see, this entire thing is the lobby. It's a very, very aesthetically done up lobby. The interiors are absolutely wonderful, typical Scandinavian style. There is a pool table. There are multiple sofa seating. These are all typical Scandinavian sofa seatings. And now let's come ahead. So all these are available for guests. These are all common areas, common sitting areas. You can lounge here, you can work from here. These literal living rooms are places where you can work from. इस तरह के कम से कम 8 से 10 अलग अलग चेम्बर्स हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं where you can work from. जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, let me take you to another very बहुत ही एक कमाल की जगह. This is the lounge area where you can watch television, play games. There's a common like a communal table. There's a foosball, and look here, this is a common kitchen. I think ये रात का बहुत mess हुआ हुआ है यहाँ पर, so guests can cook their food here. It's a very beautifully designed kitchen with its own refrigeration, cooking appliances, equipment, and now for the best part. Let's take you to the gym and the sauna. Enter the beautiful gymnasium. यार, दिल खुश कर दिया. Look at this gymnasium. It's an absolutely, completely, fully equipped gymnasium right by the street. This hotel is very close to the harbor. Just 2 minutes away from the harbor. Absolutely amazing place. और चलिए अब आपको यहाँ की सबसे प्यारी जगह लेकर चलते हैं। फिनलैंड जाना जाता है अपने सौनास के लिए। यहाँ पर जितने लोग हैं उससे ज़्यादा सौना है। ये ठंडा देश है, साल में से 9-10 महीने ठंड रहती है यहाँ पर, इसके लिए लोग सौना बहुत लेते हैं। हर होटल में, हर घर में देयर इज़ अ सौना, और इस होटल में तो बहुत ही ख़ास सौना, जकूज़ी, स्टीम, इट्स एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेस. So you see, this is their beautiful sauna, the sauna area. Okay, this is the absolutely beautiful jacuzzi area. There's a steam room here. Beautiful hotel. इस होटल ने हमारा दिल जीत लिया है. You see what I did there? दिल जीत. इस होटल की सबसे कमाल की बात यह है that they have an absolutely
automated check-in. So you see these devices, you just need to come here, they will send you a confirmation code, enter the code, take pictures of your passport, and automatically you can get your key card registered here on this machine. So it's a very efficient way of working. It's a very typical Scandinavian style of functioning. ये मेरे जो पीछे है, क्योंकि अभी सवेरे का टाइम है, this is the beautiful restaurant. In fact, it's a very, very popular restaurant in Helsinki. I would strongly recommend Noli Studios as a hotel if you're staying in Helsinki. Beautiful designer boutique hotel. It's not cheap, but it's not very expensive. I would say it's great value for the kind of place that they're offering. So the next time you are here, next time I'm here, I'm definitely staying at Noli Studios. So I hope you enjoyed this video. I hope it helps. And till next time, bye-bye.